अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। जी जी। आज जिस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है वेयर आर दे नाउ, इंडियन फ्रॉम 1967। तो इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे, इंडियंस फ्रॉम 1967 टॉक अबाउट द फ्यूचर। वीडियो हुई थी पूरी फ्लॉप। जस्ट अंटिल अ फ्यू मंथ्स अगो इसके 10,000 भी व्यूज नहीं हुए थे। फिर वन डे अभी न्यू ने इस पे एक कमेंट डाल दिया, दिस इज गोल्ड। और फिर क्या था, फिर जो ये वीडियो उठी है, in less than a week the video got over 4 lakh views. The comments started pouring, reaction videos बनने लगे, Twitter threads, Reddit threads. Basically, I got famous. So the video is basically an edit of another video that was made in the year 1967 titled I Am 20. It was made by the Film Division of India, which, as the name suggests, is a division of India that makes films. The film division did some really interesting work in the past, but as of lately, their work is a bit unusual. I Am 20 का premise काफी simple है. In the year 1967, 20 years after the British had said tata bye-bye to India, the filmmaker S.N.S. Shastri decided to interview some 20-year-olds who were born in the year 1947. Shastri ji ने उन्हें interview किया about their thoughts, aspirations and goals in life. He asked them about what they feel about India and what they think is the future of India going to look like. मैं almost इस video के सारे details भूल चुका था, so I decided to watch it again along with you guys. What I like about this video is that it has so many layers to it. It has people from all over India, from different regions, from different economies, from different political backgrounds. For example, there is a person who loves India. I'm an Indian and India means everything to me. I'm a part and parcel of India. India is a part of my life. And then there is someone who does not love India. I don't have any love for the country. There are some people who are affluent. I have more money to buy things. And then there are people with limited needs. हम घर में 13 माह हमारी मजदूरी पूर्ति नहीं है साहब. There are some people who are hopeful about India. I would say our achievement is that we have a hopeful tomorrow. And then some who are not. I don't think there's any future left for us. You know what amuses me the most? It is the idea of the video itself. Such an idea seems to be so wacky, you would expect it to exist in the 21st century. Something that humans of New York would do, or something that a BuzzFeed could create. For something so refreshing to exist in 1967, it just makes it all the more intriguing. अगर तुम इस वीडियो की एडिट को भी देखोगे, it's so intelligently made as if शास्त्री जी तुमसे बात कर रहे हैं, as a time capsule for you to appreciate the past. I later also found out that there was a Russian film released in the year 1962 जिसका नाम was I Am 20. उस फिल्म का प्लॉट revolved around 3 friends who wonder about the future and meaning of life, and they try to find their place in society. Now, I don't know about you, but I am willing to place a bet that that film somehow must have influenced Shastri ji in naming this film at least. Anyway, so I loved going through all the comments and I resonated with them quite a bit. My favorite one was this, जहाँ पे you said कि ये सारे actors हैं and probably 60s का makeup करके ये बस बात कर रहे हैं. किसी ने ये भी बोला कि अगर तुम इस वीडियो को कलर कर दो तो ये ऐसा लगेगा जैसा कि आज के टाइम में कोई बोल रहा है. That idea just stuck to my mind and I was like, मैं तो ये करने वाला हूँ. And so for 6 hours मैंने अपने लैपटॉप का बैंड बजा के एक very powerful AI algorithm run किया and I colorized the whole video and you can find it over here in the link above. I feel the color makes the video even more surreal, as if this is something that was shot just yesterday and these are people you know from your class or from your college. कमेंट्स में काफियों ने ये भी पूछा कि भाई इन सब की इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है. आई थिंक दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन कंसिडरिंग द फैक्ट कि 1967 में इंडिया की लिटरेसी रेट वाज जस्ट अराउंड 31%. तो तुम्हारा ये मानना गलत नहीं होगा कि उस टाइम पे पीपल कुडंट इवन रीड एंड राइट, लेट अलोन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश.
Well, so how are they so good in English? Shastri ji was not very happy with the first round of interviews that he did in rural India or city streets of India. उनको चाहिए था कुछ smart answers, thoughtful answers. So he went to India's best college, well, one of the best colleges, IIT Bombay, and he interviewed some of their brightest students there. Therefore, many of these English-speaking boys that you see in this video are from IIT Bombay, which explains why they might seem a bit more educated than your average Indian. Side note, I come from an IIT as well, and I can assure you that this is not common for a lot of IITians today to speak with this fluency. By the way, I also feel personally that the English used in this video is much closer to British English, while the Indian English that we use today is much close to American English, which is why the language here might seem a bit more formal, articulate, and fluent compared to today's standards. Well, but that's a topic for another video. Anyway, काफ़ी सारा build-up हो गया, अब मुद्दे पे आते हैं. The very reason this video was made was to answer a burning question that all of you asked. कहाँ हैं ये सारे लोग? What happened to them? कौन इंडिया में है? कौन चला गया? इनके नाम क्या है? ओके बाबा, calm down, बैठ जाओ, बता रहा हूँ. So ये फिल्म में कभी कोई क्रेडिट्स मेंशन नहीं हुए थे, so we don't have access to their names directly. But I have some good news for you. काफी जासूसी और तहकीकात के बाद I have found out the names of 7 people from this video. I had to use a lot of Sam, Dam, Dand, Bed. Actually not, I just had to Google and send some emails. But ठीक है, बहुत बकर हो गया. चलो शुरू करते हैं. The name of this charming young lady is Naina Puranik. She is the only person from an urban city जो कि हिंदी में बात करती है, इंग्लिश में नहीं. She talks about how eve teasing is on the rise. लेकिन ना आजकल के लड़के क्या करते हैं, बस आते हैं, धक्का देते हैं और भी कुछ करते हैं और भी बड़ी बुरी मिस्चिफ करते हैं. In another scene, she is asked if she'll choose her own husband. कौन सिलेक्ट करेगा? ओह देखिए, अगर मुझे अच्छा लगा, दिख पड़ा, अच्छा पढ़ा लिखा है, नेचर अच्छा है, तो मैं भी कर सकूंगी. अगर मुझे भी कुछ उसके लिए फीलिंग्स हो गए तो. Compare this response to that of the girl who spoke just before her. शादी हो गई? हो गई सर. कब हुई? 12 साल हो गया. वक्त तुम्हारी उम्र क्या थी? 8 साल. कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी थी सर. कोई बात याद है शादी की? नहीं है साहब, अच्छा खाने मिला था, मिठाई, अच्छा कपड़ा मिले थे. Notice karo ki how Naina ji was representative of the free urban girl of the 1960s India. A lot of you in the comments were also simping for her. Oh, she has big eyes, she can be an actress, wah. I mean, I don't blame you. She was also asked if she dreams of being a possible film star. And Naina ji says, देखिए, हीरोइन बनना तो मैं अच्छा समझती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेरे लिए वो बात नहीं है, मैं नहीं बन सकूंगी. Naina ji today lives in Jabalpur, and according to an article by The Mint, Naina ji ने अपने फैमिली को पूरे 50 साल तक इस वीडियो के बारे में नहीं बताया था. When she saw a photo of herself from this video, she said, जब मैं पिक्चर को देखी तो मैं जोर से चिल्लाई और अपने पति को बोली कि ये तो मैं हूँ. मैं तब काफ़ी छोटी थी. मेरे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही मेरी शादी हो गई थी और मैं अपने शादीशुदा जीवन और अपने बच्चों में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई कि ये फिल्म मेरे माइंड से निकल गया. नैना जी का जन्म 20 अगस्त 1947 को हुआ था. जिस टाइम पे ये वीडियो शूट हो रहा था तब वो SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई में पढ़ रही थी. उनकी मदर उस वीडियो में आने से रिलक्टेंट थी, सो द फिल्म मेकर इन्वाइटेड बोथ ऑफ देम टू फिल्म सिटी इन गोरेगांव वेयर दिस सीन वाज शॉट. She got married to Wing Commander Arvind Vasudko Rao Puranik and she has 3 children with him. जब नैना जी को पूछा गया कि कैसा लगा उनको अपने 20 साल के वर्जन को देखकर, तो वो बोली, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाई कि ये मैं हूँ. कहाँ 20, कहाँ 71. उनको जब अपने जॉब करियर के बारे में पूछा गया, she said, मेरी माँ ने मुझे कभी कोई चांस ही नहीं दिया कोई करियर परस्यू करने का. मैं कभी एनकरेज ही नहीं हुई. बस यही कमी रह गई. The last we see of Naina ji in the film is when she is asked of her thoughts of India in the future, to which she very innocently says, हिंदुस्तान का भविष्य तो वैसा आज मैं कैसे बता सकूंगी. Alright, so that was Naina Puranik ji, the beautiful girl from 1960s. Now let's move on. একটা স্বাধীনতা আছে আমার মনে হয়, যেটা সত্যি স্বাধীনতা, সেটা হলো মনের স্বাধীনতা. अगर उस टाइम में मैं स्टूडेंट होता ना IIT बॉम्बे में, तो ये बंदा मेरा बेस्ट फ्रेंड होता, क्योंकि हम दोनों ऐसी एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसफिकल बातों में बहुत कनेक्ट करते. ऑल्सो तुम में से काफ़ी लोग इन पे भी सिम्प कर रहे थे, कॉलिंग हिम सैफ अली खान एंड वॉट नॉट. Again, I don't judge you guys because in fact मैं भी सिम्प कर रहा था. He is the only guy from IIT Bombay who talks in Shuddu Bangla and confesses his love for learning languages and never finding the opportunity to do it. তা অনেক কিছুই করতে চাই, ফ্রেঞ্চ পড়তে চাই, জার্মান পড়তে চাই, রাশিয়ান পড়তে চাই, সে কখনো সময় পায় না, কখনো উপায় পায় না. I mean, at this point I'm thinking that is so me. Look at what he's saying. দারুণ ক্যাপ্টেন পটর্ডি,
কিন্তু আসলে যখন পটৌডি একটা সেঞ্চুরি করে তখন আমার মনে হয় না যে আমি একটা কিছু করেছি। আমার মনে হয় যদি আমি একটা সেঞ্চুরি করি তাহলে তাহলে আমার সুখ হয়, আমার শান্তি হয়। Amar Shukh hoy, Amar Shanti hoy. Look at what he's saying. He says admiring role models is great, but I wish I did something that gave me the personal glory and satisfaction. That is again a sentiment I resonate with. What a guy, dude. What an amazing guy. So his name is Anubroto Kumar Roy, affectionately called as Dunu Roy. After he graduated from IIT, he went to work in rural development, spending 17 years in a single district in central India, where he helped villagers plan their lives and solve basic problems. Basically, he became real-life Mohan Bhargav. Today, he's the director of the Hazard Center in New Delhi, where he works with the urban poor who live in the margins of our society. राशन की दुकान वाला एक है कि चार है? एक है। FSO साहब एक है कि चार हैं? तो जब ये एक हैं, तो आप क्यों चार हैं? तो इसीलिए अगर आपको कुछ करना है, आपको भी एक होना पड़ेगा। Some of you remarked that at the time of the interview in 1967, there was a communist revolution taking place in Bengal, and so Dunuji's remark on Mone Shadhinota should be seen against those settings. You can see a passion for revolution, a sense of standing for the masses in this Bengali man. Common sense says congestion on roads is caused by cars. Wisdom says no, you must remove the cycle. You must remove the street vendor. Why? Because these are the people who stand in the way of the car going fast. That's how the poor get moved out. That's what exclusion is all about. Also, big reveal, he was my point of contact for a majority of the research in this video. He was really nice to me in replying to my emails, told me about the names of the people I was looking for, and he thanked us all who showed all this massive interest in the video. What an amazing guy. Let's move on. Dunu ji ने मुझे कुछ ऐसे facts भी बताए that I wouldn't have been able to find out on my own. For example, the person who appears in the film for a few seconds in the beginning is Ashutosh Haldipur. He does not speak in the video, but he was a classmate of Dunuji's. The only trace I could find about him online was his LinkedIn profile, and according to this profile, he moved to the States soon after he graduated in 1969 to pursue a master's in materials engineering. He now lives in Buda, Texas, and he seems to have retired in 2002 as a process engineer in Motorola. When I feel that foreign blades are more economical than our Indian blades, why shouldn't I go and use them? Because I save my money. Because I very strongly believe that they serve the much better purpose and are more economical. I'm embarrassed to tell you guys that I had no clue how famous this foreign blades guy was. I say was because Aditya Kashyap passed away from cardiac arrest following his diagnosis with cancer in 2007. After graduating from IIT Bombay, Kashyap ji went on to study at IIM Calcutta. He spent 22 years in Tata Steel, formerly known as Tisco, where he became a joint director. He was a protege and an adopted son of Rasi Modi, who he was very close to. The media houses often referred to him as Modi's blue-eyed boy. Very interestingly, in 2006, he also became the president of the Indian Football Association after being the president of the Bengal club. He had also arranged for players to go to Sao Paulo to get football coaching. He was also responsible for organizing the Super Soccer Cup in India and to get Sahara as a sponsor. He died a bachelor in 2007 in Kolkata. Progress. Of course we made progress. The sort of progress you show us in your documentary films. But after all, a child would grow, even if it didn't have the sufficient nourishment. Victor Meneses is the definition of a pure bad. He drops truth bombs like there ain't no tomorrow. अगर ये बंदा मेरा क्लासमेट होता ना तो मेरी इससे बहुत फटती. Because I see in his eyes a kind of energy that just intimidates me. He says कि इनको IAS बनना है. For some people, security is a warm blanket. For me, security is a government job. I would like to join the IAS. और इनको एक AC रूम में बैठना है. I would like to sit in a comfortable chair, in an air-conditioned room, stand a couple of files here and there, write my comments in the margin, drink cups of coffee, attend meeting, and just sort of be a cog in the machine. What I did not include in the edit was कि इन्हें अपने बॉस की बेटी से भी शादी करनी है for some reason. I will join government service. I must join government service. I would like to marry my boss's daughter. If I could. Don't ask me why. ये शायद इस वीडियो के इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनकी प्रेडिक्शन अपने बारे में पूरी की पूरी गलत साबित हुई. Victor G, after graduating from IIT Bombay with a degree in electrical engineering, did an MBA from MIT's Sloan School of Management. Not bad. He did pretty damn well for himself in the States, joining Citicorp in corporate banking. In 95, he rose to the position of Chief Financial Officer and he retired from Citigroup as a Senior Vice Chairman. Alright, get ready for his resume.
Currently, Victor Meneses chairs the advisory board for City India, is a senior advisor for the New Silk Road, chairs the American India Foundation, is a vice chairman of the Asia Society, is also the vice chairman of New York Catholic Charities, chairs the executive committee of the Eisenhower Fellowships, is a board member of ETS, the same organization that conducts TOEFL and GRE, is a board member of the MIT Corporation, and a board member of IIT Bombay, Indian School of Business, MIT Sloan, and NCR. Oh my God. He also donated $3 million to IIT Bombay to have a convention center named after him, known as the Victor Meneses Convention Center VMCC. It was inaugurated by Mr. Kapil Sibal in the year 2011. I've said it before, and it bears repeating. All of us were privileged to join IIT for a priceless education, which we got basically for free. And if you think of the context of the times when we were here, India had a lot less money then than it is today. And the claims on government funds were pretty significant. So to create these islands of excellence in a sea of chaos and poverty was really a very far-sighted and brave move on the part of Pandit Nehru, the Education Ministry, and the faculties of IIT. I think the 20-year-old Victor would be a lot more proud of what he has attained in all these years than if he went on to just become another IAS officer. Did I just throw shade at the whole UPSC? You bet I did. Okay, Ashish, get hold of yourself. Enough of the Victor Meneses energy. Ooh, calm down. Also, just in case you're wondering, he did not marry his boss's daughter. He married a Miss India, who also happened to be the second Indian to be crowned Miss Asia Pacific in 1973, Tara Ann Fonseca. When Victor G was asked about India, he said the reputation of Indians, of Indian products in Indian universities has gone through the roof. You can't go into any company in the world today without seeing Indians in senior management. He thinks India has done very well, but the world is changing and we must keep pace with it. He says that we as a nation have to invest a lot more in education and we should get the help from wherever we can. Today it only means that the man has freedom to starve, to go naked, to die of hunger, and to go uneducated. These biting remarks are by Shailesh Gandhi, who was a student of civil engineering in IIT Bombay. Shailesh ji seems critical of the then 1967 India. He complains about the inequality that he sees in Gujarat. I'd been to a village in Saurashtra some 3 years back, and I saw a very happy life. I saw that there was an ST bus coming to that village, there were roads, there was a Gram Panchayat radio, there was a windmill in that village. It was all very good. Then a year later I went to an Adivasi area in Gujarat again. And I saw that the people had not even heard of a plane or a train. And I felt that this was not progress. IIT से ग्रेजुएट करने के बाद 1980 में शैलेश जी ने क्लियर प्लास्टिक्स लिमिटेड नाम का एक कंपनी सेटअप किया। वो कहते हैं कि उनका एम था लोगों को रोजगार मुहैया करवाना। उनको उनके किसी प्रोफेसर ने एक एलुमनाई फंक्शन में पूछा था, तब तो समाज और देश को लेके काफी सिनिकल थे तुम, अब क्या सोचते हो? शैलेश जी का जवाब मेरा दिल छू गया। उन्होंने कहा, जब मैं 20 का था और मैं देश की बुराई कर रहा था तो मैं ये मान के चल रहा था कि हम इससे बेहतर करेंगे। मुझे अब रियलाइज होता है कि मेरा जनरेशन मेरे अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा। जब 20 का था तो दूसरों पे इल्जाम लगा सकता था, अब 50 का हूं तो जिम्मा मुझे खुद उठाना पड़ेगा। मैं इस कंक्लूजन पे आया कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। 2003 में शैलेश जी ने अपनी प्लास्टिक कंपनी बेच दी। उस टाइम पे वो RTI या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से वाकिफ हुए। उस टाइम पे इंडिया में कोई नेशनल RTI एक्ट नहीं था, मगर 9 राज्यों में RTI का प्रावधान था। शैलेश जी ने महाराष्ट्र RTI का यूज करा और उन्होंने रियलाइज किया कि RTI में डेमोक्रेसी को सशक्त करने की काबिलियत है। वो काफी सारे RTI वर्कशॉप्स कराने लगे ताकि लोग RTI के बारे में जागरूक हों। उन्होंने ये रियलाइज किया कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने में और करप्शन को घटाने में RTI का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। शैलेश जी नेशनल RTI मूवमेंट का हिस्सा बने और नेशनल RTI एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी में भी शामिल हुए। लेटर ही वाज आल्सो चोजन एज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर where he disposed about 20,000 cases in about 3 years. 2007 में IIT बॉम्बे ने उनको डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस के पद से नवाजा। समाज को चोरी होती है उस पर आपत्ति नहीं है, समाज को आपत्ति यह है कि चोर की जेब से कोई जेब कतरा क्यों पैसा निकाल रहा है। मुझे बड़ी हंसी आती है, बड़ा दुख होता है कि हमारा किस तरह का देश बन रहा है। शैलेश जी की स्टोरी हमें ये बताती है कि जब कोई देश को क्रिटिसाइज करे, इट इज नॉट ऑलवेज बिकॉज दे हेट इंडिया, इट इज ऑफ्टन बिकॉज दे केयर अबाउट इंडिया एंड दे आर डिसअपॉइंटेड विद द करंट स्टेट। इट वाज हिज क्रिटिसिज्म दैट मेड हिम टेक एक्शन, दैट मेड हिम अकाउंटेबल, एंड थैंक्स टू हिम टुडे दैट वी एज सिटीजंस हैव द राइट टू मेक आवर गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल। Well, I don't know. It seems to be the fashion today to denigrate the country, and when two people meet, they get into a sort of a competition about who can abuse the government better. I've saved the best for the last.
This guy was the main reason you asked me to make this video. In many ways, this guy is the soul of this video. With the wisest words, the most intelligent comments, he talks about a desire to explore this country in all its glory and shades. One thing I would like to do very much is to go through this country, top to bottom. I take a little bit of money and a pad and paper, a tape recorder and a camera, and I'd like to go to through this country, walking at a very leisurely pace. He's the only one who talks about India with such a high-spirited optimism. Well, let me put it this way. I would say our achievement is that we have a hopeful tomorrow. Our failure is that our today is very precarious. But if a country can industrialize itself so well in 15 years, I'm sure that we can lick the problem of agriculture also in the next 15 years. And he leaves us with a message that is reassuring, making us proud of the big experiment that is India. If all the people in this country who didn't fancy their prospects in it we're allowed to quit, I think I'll stay. Because it's something big. It's a huge experiment. And I would like to be part of it. And also point to note, he's the only speaker in this video who was given the privilege of an introduction. Well, my full name reads T.N. Subramaniam. T stands for Tinnavelli, that's the name of my village. N stands for my father's name, Neelakant, and Subramaniam, of course, is my name. Maybe I am talkative and very loquacious and I make my presence felt. Possibly I talk like a preacher or a politician. But then I am entitled to my opinions. But maybe all of you will be disappointed to know that T.N. Subramanian, despite the excitement, decided not to be a part of this experiment. Soon after graduating from IIT Bombay, he left for Massachusetts to pursue his graduate degree and later a PhD at the Brandeis University. He later became a professor of mathematics at the Oakland University in Michigan. He joined Route 1 as a technology architect, a software company that helps with car loans. I don't know if he would be excited about India today, but he's certainly excited about the summation of rational functions by extended Gosper algorithm, or maybe reduction formulas if you're into that. Saman Subramanian, the journalist who wrote an extensive article on him on The Economist, tried contacting him many times. He tried to find about his whereabouts, but he learned that he had suffered a stroke and would not be able to respond. Today we do not know about his current state. But from Dunuji, I found out in the emails that the last he had heard, TN was diagnosed with cancer. कहानी का मोरल क्या है? कहानी का कोई मोरल है भी क्या? मुझे नहीं पता. मुझे ऐसा लगा जैसे TN ने मुझे धोखा दे दिया. I felt betrayed that he did not participate in that great experiment that he was so passionate about. Did he really mean when he said he wanted to take a pen and paper and go through all this country? इतनी मीठी मीठी बातें, क्या वो सारा एक performance था? Was that all a lip service just for an interview? It made me so embarrassed for feeling so emotional and proud of him. It made me even more embarrassed because I had snubbed at people who did not share the same excitement as him. यार 2 घंटों के लिए मीठी मीठी बातें करना ये तो आसान काम है. पता है मुश्किल क्या है? मुश्किल है मध्य प्रदेश के गरीबों के जीवन को सुधारने के लिए अपने लाइफ के 17 साल दे देना. मुश्किल है 50 की उम्र में तुम अपनी कंपनी बेच दो अपने देश की नीतियों को सुधारने के लिए. मुश्किल ये भी है कि इतना सक्सेस पाने के बाद तुम अपने देश को भूलो ना और उसके लिए कंट्रीब्यूट करो. मेरा गुस्सा जब थोड़ा शांत हुआ और मैं थोड़े शांत मन से सोचा तो मैंने अपने आप से पूछा, क्यों आ रहा है मुझे इतना गुस्सा? क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि एक 20 साल का लड़का जो बोल रहा है वो 50 साल के बाद भी वही करेगा? मैं बचपन में कितनी वाहियात चीज़ें सोचता था. मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था, पायलट बनना चाहता था, आई थिंक एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहता था, और अब देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ. तो फिर मैं इस इंसान को सेम राइट्स क्यों ना दूं? मैं क्यों एज्यूम कर रहा हूँ कि ये लेफ्ट वाला बंदा और ये राइट वाला बंदा सेम इंसान है? पता है ह्यूमन बॉडी की हर सेल ना 7 सालों में पूरी रिप्लेस हो जाती है. हर 7 साल तुम्हारा बॉडी पूरा न्यू हो जाता है, एक सेल नहीं बचता. और इन दोनों में तो 50 साल का अंतर है. इस बंदे का हर सेल 7 बार रिप्लेस हो चुका है आज. फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि ये दोनों सेम इंसान रहेंगे? अगर तुम 20 साल के TN से इंस्पायर्ड होते हो तो तुम्हें शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है. क्या पता उनकी कोई मजबूरी रही हो US जाने में. मे बी मैथ से इनको इतना प्यार हो गया कि मैथ्स ही हो गई सब कुछ इनके लिए जीवन में. मे बी इनकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहा हो US में, या फिर शायद कोई अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट्स. कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या पता. शायद ही स्टिल लव्स इंडिया. चलो TN को साइड में रखते हैं, अपनी बात करते हैं. इंडिया की सक्सेस जुड़ी है तुम्हारे सक्सेस के साथ. जितने लोग होंगे उतने डेफिनेशन होंगे सक्सेस के. तुम्हारे लिए सक्सेस हो सकता है यहाँ रहकर गरीबों के हक के लिए लड़ना. तुम्हारे लिए सक्सेस हो सकता है देश की नीतियों को नई दिशा देना. सक्सेस तो ये भी हो सकता है कि तुम बस यहाँ पर रह के एक सुखी जीवन व्यतीत करो.
अपने बच्चों को अच्छी से परवरिश दो, अपने परिवार को सपोर्ट करो, या फिर तुम्हारे लिए सक्सेस ये भी हो सकता है कि तुम यूएस में जाके नए थ्योरम्स का डिस्कवर करो, एक्सटेंडेड गॉस्पर एल्गोरिदम की मदद से रैशनल फंक्शंस को समेशन करो। हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, और क्या एक आज़ाद देश की ब्यूटी ही नहीं है कि वो तुम्हारे लिए गोल डिफाइन नहीं करती? एक आज़ाद देश तुम्हें अलाउ करती है अपनी लाइफ की कहानी खुद लिखने के लिए। तो मेरा सवाल तुमसे ये है, तुम्हारा क्या डेफिनेशन है इंडिया की सक्सेस का? तुम क्या कहानी लिखना चाहते हो अपने लिए? 20 साल के बाद तुम क्या सोचते हो इंडिया का भविष्य क्या होने वाला है? वैसे इफ़ यू आस्क मी, हिंदुस्तान का भविष्य तो वैसा आज मैं कैसे बता सकूंगी। कमेंट्स में बताना मुझे। I'll see you in the next video। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं। हाँ जी, तो भैया जब हमने ये वीडियो देखी पहले, जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो देखा, तो हमने जो है वो बहुत कुछ सीखा इससे। लेकिन आज उन लोगों की लाइफ के बारे में सुन के, तो इसी तरह हर बंदा, वो कहते हैं ना कि अपने आप में एक कहानी लिए फिरता है, हर बंदे की एक अपनी स्टोरी होती है। तो वही वाली फीलिंग आ रही है कि हर बंदा कुछ और करना चाहता है और होता कुछ और है। अब वो 20 ईयर के थे तो उन्होंने उनके ये एम्स थे, और हम कभी जो है वो क्या कहते हैं कि 5 क्लास की बात है, जब हमारे सर हमसे पूछा करते थे बेटा क्या करोगे, तो तब हमारे जो है वो एम्स जो थे वो ऐसे थे कि कुछ कहते तो मतलब हमें, मेरा पापा जो हैं वो एक डॉक्टर हैं, मतलब क्या कहते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो वो ऐसे ही कहते कि अच्छा तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं तो तुम्हें पैसा दे लेंगे, इस तरह कर लेंगे तो तुम जो है वो डॉक्टर बन जाओगे। तो इस तरह का सीन जो है वो माइंड में चलता रहता था जी। तो ये जो बातें होती हैं बचपन वाली, वो क्या कहते हैं बचपन में रह जाती हैं, बचपन छूट जाता है। आज भी जब वो मुझे देखते हैं एमए उर्दू के साथ, कि मास्टर ने उर्दू किया हुआ है और एक प्राइवेट सेक्टर में जो है वो टीचिंग कर रहे हैं, तो फिर वो, हालांकि वो तो गवर्नमेंट टीचर हैं, तो वो अब देख के तो बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। और मुझे ये भी कहा करते थे कि मतलब मुझे नाम से ऐसे कहते थे, डॉक्टर साहब कह के मेरी पूरी क्लास में जो है वो होता था। तब ऐसे लगता था कि पता नहीं अभी सब सच में डॉक्टर हैं तो बन जाना, ये तो कौन सा काम है, ये तो बस हाँ पापा बन गए तो हम भी बन जाएंगे, ये कौन सी बात है। ये वो छोटे मोटे डॉक्टर बन भी सकते थे अपने पापा से सीख के। जैसे यहाँ पे तो होता है, लोग जो है गली मोहल्ले में डॉक्टर एमबीबीएस के अलावा हैं, आपकी कंट्री में नहीं होंगे, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे काफ़ी जो है वो डॉक्टर जो एमबीबीएस हैं वो तो ज़रा महंगे हैं, तो फिर कुछ सीखे सिखाए थोड़ा बहुत जो मेडिकल का जानते हैं कुछ, तो गुजारा कर लेते हैं देहातों में कह लें, और कुछ सिटीज़ में भी बैठे हुए हैं लोग। खैर ये बातें और तरफ चली गई। तो बात हो रही थी कि क्या सोचते हैं हम 20 साल में होके, आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कंट्री आपको आपके वालिदैन ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो ज़्यादा आपके स्कूल के टीचर्स आपको सही रास्ता दिखाते हैं। अब 2021 की बात कर रहा हूँ, 2022 आने वाला है, तो ये आपकी जो लिटरेसी रेट है वो हमसे ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो आप अभी, आपको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का, और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। तो यही कहने का मकसद है कि वो बात जो है वो मुझे याद आ गई कि जब हम 5th में थे, 12 साल एज रही होगी यही कि 10-12 साल। 12 साल। हाँ, तो उस वक्त तो यही था कि अभी यहाँ से निकलना है, 5 के बाद तो डॉक्टर बन जाना है। और अब जो है जब वो टीचर्स हमें देखते हैं और कहते हैं कि जनाब फ्री, मतलब पंजाबी में कहते हैं वेले, तो ठीक है गुजारा हो रहा है और यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, आगे आगे जो है वो ज़माने की ठोकरें खाई हैं। तो और ये हमारे भाई शहजाद साहब, ये भी हमारे क्लास फेलो हैं, हम वो क्या कहते हैं फर्स्ट प्रेप से लेके आज तक साथ चलते आए हैं। आगे पता नहीं सफ़र कितना है या क्या कहते हैं कितना रह गया, और इन्होंने तो फिर मैथ कर लिया आगे जाके, और हम जो है वो उर्दू की तरफ चले गए। तो ये सीन होता है, लाइफ में चेंजिंग्स आती रहती हैं, चीज़ें जो है वो हमेशा बंदा जो डिसाइड करता है वो नहीं हो पाती। लेकिन एक चीज़ हम में कॉमन हुई है, वो है बी फार्मेसी।
तो बी फार्मेसी की जो है वो हम स्टूडेंट इकट्ठे हैं, हमने डिसाइड किया कि अच्छा यार कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, तो ये साथ में स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, ये एक बात मैं भी कहता चलूं कि अभी जिमी चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, कि इन्होंने एक और भी बहुत अच्छी डिग्री हासिल की हुई है और साथ साथ इन्होंने मास्टर कर लिया है, बेशक उर्दू में। और उर्दू के मास्टर तो फिर मास्टर ही होते हैं जी, आप उनकी शान जानते ही होंगे। और फिर बी फार्मेसी भी कर रहे हैं और साथ और भी बहुत सारे इन्होंने बिजनेस संभाले हुए हैं और खुद एक प्राइवेट सेक्टर कॉलेज तक ये पढ़ा रहे हैं। तो अभी भी ये कह रहे हैं कि कुछ ना करने से कुछ हो जाना बेहतर है। एक्चुअल वैसे वही बात ना याद आ जाता है ना कभी कभी जब इस तरह का सीन आता है, तो फिर और वो ये अब आप भी देख फकीर साहब लें, की फकीर हुसैन साहब की वो बात याद आती है कि जब वो हमारे पास खड़े होते थे, खास करके मेरे पास, वो कहते थे कि बेटा आप आज मुझसे जो आधी तनख्वाह ले लो, जब आप जॉब करोगे तो मुझे, मैं बूढ़ा हो चुका हूँगा, मुझे जो है वो आधी तनख्वाह देना। और उन्होंने मजाकन मजाकन जो है ना कुछ पैसे निकाला करने और ना कहना कि ये बेटा ले लो, मतलब 5-10 का दौर था। तो वो कहते थे ये बेटा ले लो और याद रखना ये मैं आपको आज दे रहा हूँ, तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तक आपकी जॉब हो चुकी होगी, तब आज जो है ना आप मुझे आधी तनख्वाह दिया करेंगे। तो अब भी वो गुजरते हैं तो बड़ा उनको देख के जो है वो एक क्या कहते हैं, थोड़ा सा दिल में आता है कि सर क्या सोचते होंगे। तजस्सुस सा होता हाँ, है। क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब है और हम जो है वो प्राइवेट धक्के खा रहे हैं, तो थोड़ा सा फील होता है। क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर कोई जॉब मिल जाए गवर्नमेंट की, क्योंकि फिलहाल तो 1 करोड़ जॉब्स आनी थी और वो मैं परसों सोया हुआ था तो वो मेरे सोते हुए गुजर गई। तो जल्दी आ गई जल्दी आ गई ना, जल्दी तो चले हाँ, गई। नया पाकिस्तान बना था ना, तो वो 1 करोड़ जॉब्स आनी थी। वो आके ना, मैं परसों सोया हुआ था, रात को एडिटिंग करके ना 12-1 बजे मैं सोया और 3 बजे तक वो आई थी, और सुबह जब मैं उठा तो तो वो चलेगी, वो खत्म हो चुकी थी। और हाँ वो अब पता नहीं ये गवर्नमेंट वो जॉब किसे कहते हैं जो नहीं नहीं, 2 असल में घंटे के लिए असल आई में फिर ना चले। असल में वो बयान आया है ना, वो 1 करोड़ की आनी थी ना, जो आपको पता है ना, आपने सुना है ना, वो तो फवाद अपने चौधरी दिल में साहब, जगह दी उस नहीं बयान नहीं, को। फवाद चौधरी साहब का एक बयान आया है ना, आपने सुना है ना, कि हमने तो इस साल में हमने तो अपने 4 सालों में जो है वो 1.5 करोड़ जॉब्स दे दी। तो वो तो उन्होंने 50,000 जो है वो एक्स्ट्रा भी दे दिए। तो वो भी होंगे हमारे जैसे कई तो वो प्राइवेट। दरअसल ना उनसे गलती हो गई थी, उन्होंने जॉब का कह दिया। एक्चुअली उन्होंने डिग्री का बोलना था कि हमने 1.5 करोड़ डिग्री दी हाँ है। जी 2021 में हम बगैर पेपरों के बगैर एजुकेशन के हम डिग्रियां हाँ, बांट 1.5 करोड़ डिग्री दी है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। तो स्टूडेंट्स को उन्होंने डिग्रियां बांट दी हैं, तो फिर गलती तो इंसान से हो ही जाती है ना। खैर जी, टॉपिक से थोड़ा हट गए हैं। तो टॉपिक में जो जितनी भी हमने ये वीडियो देखी, पहले जब हमने इस पे रिएक्शन किया था तो हम भी ये सोच रहे थे यार ये इतनी पुरानी बात है और इतनी ये अच्छी कहाँ इंग्लिश, होंगे? इतनी अच्छी इंग्लिश उन लोगों की, और यकीनन ये लोग किसी न किसी मनसब पे किसी ओहदे पे फायज होंगे। स्पेशली वो जो गर्ल थी, वो एक गर्ल थी, लड़की एक, उसका जो आई साइड एक्शन था देखने का, तो मुझे ना फील हो रहा था ये ज़रूर कोई ना कोई एक्टर होगी या फिर फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ये नायनाज कोई शख्सियत होंगी। लेकिन अब जब देखा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, तो बहुत सारों का तो टैलेंट इनकी तरह वैसे ही दब गया होगा ना, तब की बात है। और जिन्होंने अपने टैलेंट को मेंटेन रखा और खुद जिनके पास पॉसिबिलिटी असल और में रास्ते सर थे। ना एक और बात है कि टैलेंट होना और बात है, तब बात होता है पैसा बहुत जरूरी होता है। टैलेंट तो साथ में चलता है। वो देखे ना, एक बच्चा है वो 70-80% या 60% लेने वाला एवरेज बच्चा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में यही सीन है, आपको पता है कि जिनके पास 60-70% आते हैं और उनके एम अगर होता है डॉक्टर बनना, तो वो प्राइवेट यहाँ पे पहले तो यहाँ पे ले लेते थे एडमिशन। आजकल क्योंकि थोड़ी सूरत हाल जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट है। बिल्कुल। तो फिर अब वो रशिया चले जाते हैं, पैसा लगाते हैं और 5 साल बाद डिग्री लेके यहाँ पे आ कुछ लोग जाते हैं। अपने मकसद पैसों से खरीद पैसों से रहे खरीद हैं, और लेते हैं। कुछ बेचारे जिनके अरमान होते हैं वो अपने मकसद को पहुंचने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो लेकिन वो अपने मकसद तक पूरा नहीं उतरते, पहुंच नहीं पाते, क्योंकि पैसा भी बहुत अहम होता है
अपनी लाइफ के जितने भी अरमान हैं उनको पूरा पूरा करने के लिए, मंजिलों तक पहुंचने के लिए, मंजिलों को आसान करने के लिए पैसा भी बड़ी एक चीज़ कारआमद चीज़ है जी। तो ये वीडियो जो थी, इस वीडियो से तो मुझे भी अपने बचपन के थोड़े बहुत जो नज़र आए कि हमने भी ये सोचा था, और जिमी चौधरी साहब को तो उस पूरे का पूरा बचपन सामने आ तो गया है। बचपन में मेरा सारे का सारा सामने आ गया ये तो अब सोच कि हम रहे हैं क्या क्या मैं- करते थे, हम MBBS सोचने करना में। था, बिल्कुल। और मैं MA उर्दू करके बैठा हुआ हूँ। तो अब ये मेरे ख्याल में रिवर्स गियर लगाने का सोच रहे होंगे कि पीछे मुड़ें और MBBS करके वापस आएं, तो ये कर सकते हैं आप। कमेंट सेक्शन में इन्हें ये ज़रूर कहना यू कैन डू इट, तो यकीनन ये करेंगे। खैर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।